हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। समस्त को स्वागत। एक्सप्लोरिंग गोल्स को एलटीआर मेंस हो, ओटीटी हो कि ओएस हो, एक्सप्लोरिंग गोल्स यूट्यूब चैनल रे आज टार्गेट आमर जहाँ भी था पेडागोजी टीचिंग एप्टीट्यूड रो पेडागोजी सहित रिलेटेड सब क्वेश्चंस को हमें एनालिसिस करूचे एंड दिस इज ए वेरी इंपोर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आसी जाओ फटाफट and jodi nuwa also subscribe करके bell icon hit कर दियो so that you will get all the notification of classes live and recorded and all important updates regarding vacancy and examination. Like share भी कर दियो friends मान सहित so that everyone can join and enjoy learning together, collaborative cooperative learning environment in exploring goals application मध्ये रही Google Play Store रे जहाँ को डाउनलोड करी तुम माने जॉइन करी परिबो आवर प्रीमियम बैच रे जो कि एंटायर सिलेबस रे कवरेज ई बुक्स पीडीएफ प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सहित प्रिपेयर करि परिबो। आरंभ करबा आज रो सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन रे आसी जाईची। कंसंट्रेशन फुल दम रे रखो। आज भी सही टारगेट रहिबो 100% स्कोर करिवार। थैंक यू गुड इवनिंग एवरीवन। प्रणाम समस्त को। नमस्कार, जोहार, स्वागत। Which one of the following statements is true regarding the role of heredity and environment in human development? पहला क्वेश्चन। राइट आंसर होची रोल ऑफ एनवायरनमेंट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड। हबो कि नहीं? Theory is based on behaviorism are largely based on the role of nature in human development. केवल nature नहीं. The relative effect of heredity and environment vary in different areas of development. Yes. दीटा जाकर रोल अच्छी किंतु कार कोठी केते रोल सेटा vary करे in different यार इफेक्ट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट रो अलगा रहे in different areas. Okay. Teachers and students draw on one another's expertise while working on complex projects related to real world problems in classroom. Teacher and student paraspara draw on one another's expertise while working. निश्चित, very good. Social constructivist is the right answer. बहुत बढ़िया। Number 3. An 11-year-old child's score on Stanford Binet intelligence scale is 130. Okay. By assuming mu 100 O15 in a normal probability curve, calculate the percentage of 11-year-old children this child has scored better than. Yes. Stanford Binet intelligence scale by assuming mu 100 O15 probability curve. केमती कैलकुलेट करिवो probability curve? Yes. Formula is 130 minus 100 divided by 15. केते होची? 130 रु 100 गले 30 हरण 15 समान 2 माइनस कर दियो 100 माइनस 2 कर देले केते होची? 98%. Percentage कोइच कैलकुलेट द percentage of 11-year-old children this child has scored better than 98%. केमती कैलकुलेट करा जाए एटा देखि लियो। Okay. So 98% is the right answer.
माने पाखापाखि 98% एटा एते ए टाइप रो क्वेश्चन नॉर्मली हमें हाई स्कूल टीचर एक्सपेक्ट करूने बेले बेले आसी जाए सो ए टाइप रो गोटे आइडिया थाउ कि हमें करि परिबा फेल्युअर ऑफ ए चाइल्ड टू परफॉर्म वेल इन क्लास टेस्ट्स लीड्स अस टू बिलीव दैट जदि गोटे छुआ क्लास टेस्ट रे फेल होची टू परफॉर्म वेल ताहले एटा हमें एथरु कोन ड्रॉ आउट करिबा Yes, very good. There is a need to reflect upon the syllabus, pedagogy, and assessment processes. बहुत बढ़िया. Which one of the following assessment practices will bring out the best in students? Will bring out the best in students. बहुत बढ़िया participation. It is C. When conceptual change. Yes, very good. When conceptual change and students' alternative solutions are assessed through several different methods of assessment. Alternative solution टाको भी assess करिबा conceptual change of student को भी देखिबा following assessment criteria will bring out the best in students कोइछि the alternative solution assess करिबा through several different methods of assessment reproduce केवल रहिला होबनी okay emphasize is laid upon positive correlation between test score and student ability एटा भी emphasize रे होबनी काम न हो so most appropriate is option C जो माने करिछो very good analysis करो बहुत important and एग्जाम रे आसीबा टाइप रो क्वेश्चन सी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी एग्जाम रे बहुत थरो एमतिया क्वेश्चंस हमें देखिछे research has pointed out that several levels of discrimination exist in the schools which of these is not an example of discrimination at upper primary level upper primary level रे को discrimination देखा जाए नहीं पळैले भी करबा को पड़िबो कोन करबा 20 क्वेश्चन को 30 मिनिट पळैले भी करबा को तो पड़िबो जानिथिबा क्वेश्चन तो छाडिबानी आ पढिबाटा को तो हमें पढिबा तो निश्चित यस एटा जो कहलो नहीं एटी कहिछि नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अपर प्राइमरी ले देखो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा रे मध्ये एक्सपेक्टेशन लो रखुचंत सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा जार लो तातो एक्सपेक्टेशन लो रखुचंत सीट सेपरेटली माने दलित मानन को मिड डे मील रे सेपरेटली बसौचंती गर्ल्स आर नॉट एनकरेज टू मेक मैथ एंड साइंस पढनी बोली माने तांको पढेबा पय एनकरेज करा जाउ नाही मेनी टीचर्स यूज ओनली लेक्चर मेथड टू टीच केवल लेक्चर मेथड ही यूज करा जाउची एटा नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लेक्चर मेथड यूज करा जाउ डिस्क्रिमिनेशन कोन हला डिस्क्रिमिनेशन बुझुछ कोन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन आउट के एनालिसिस करो तमे टिके आगो करो आ 2 मिनिट टाइम नियो यस डिस्क्रिमिनेशन माने कोन लो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा रो समान आसुचंती बोली तांको लो एक्सपेक्टेशन करिवो डिस्क्रिमिनेशन हला मिड डे मील खाइला बेले दलित मान को अलगा बसैलो डिस्क्रिमिनेशन हला हां सोशल बैकग्राउंड को नै कि डिस्क्रिमिनेशन कलो रिलीजियस को नै कि रिलीजन को नै कि डिस्क्रिमिनेट कलो जेंडर को नै कि डिस्क्रिमिनेट कलो किंतु लेक्चर मेथड फॉलो करिवारे डिस्क्रिमिनेशन कोठी हला मु तो एठी गिफ्टेड मान को पई प्रोजेक्ट मेथड आ स्लो लर्नर्स को पई लेक्चर मेथड करिनी ना सेपरेशन तो करिनी ना सो व्हाई नॉट ए गॉट इट भूल हे गले असुविधा बहुत दुख लागिबा कथा
How can a teacher help children become better problem solver? केमिति गोटे टीचर हेल्प करिवे, जने टीचर हेल्प करिवे गोटे छुआ को कि तू गोटे भलो प्रॉब्लम सॉल्वर हो. By giving children a variety of problems to solve and support while solving them. बहुत बढ़िया. By giving tangible rewards for solve. Rewards तो external था, तो लोगो रहिला ସେଥିପାଇଁ से कला कि जहा. By encouraging children to look for answers to the problems in the textbook. Textbook रे खोजिले problem solver केमति हो. Right? तो ये भी होबनी. By providing correct solution to all problems. The problem ପାଇଁ ଯଦି solution ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ବି ହବନି. By giving children variety of problems and solve support while they are facilitator हवा ना. Facility दबा, guide करिवा. एमती न जे सब करिकि तांकु धरै दबा. हाँ? Okay, very good. Which one of these is a principle of child development? Principle of हमें देखो 20टा क्वेश्चन करिवा भल से करिवा. 20टा क्वेश्चन करिवा भाबिनियो जे एग्जामिनेशन रे बसिचो सेही हिसाब रे करिवो. हला? ठीक करो. Which one of this is a principle of child development? Development occurs due to interaction between maturation and experience. Development can accurately predict the pace of each individual's child pace को accurately predict करी परिबा कि experience is sole determining development. Experience in सब determine करी दबो कि development is determined by reinforcement and punishment ये करी दबो कि नहीं. Development occurs due to interaction between maturation and experience. So A is right. जो मैंने करी जो बहुत बढ़िया. An upper primary school constructivist classroom could foresee the following role of students in their own assessment. Constructivist classroom koila. Upper primary school constructivist classroom would foresee the following role of students in their own assessment. ନିଜକୁ ନିଜେ assess କରୁଛି. Make detailed guideline for how marks could be correlated to students' achievement and prestige. Denying that assessment has a role in teaching learning. Deny करिवा कि? Deny करिवानी तो एटा हबनी. Student would be the sole determinant of their own assessment. Student would plan for assessment with the teacher. Make detailed guideline how to guideline किछि दरकार नहीं एते कथा prestige or in the child एते कथा नहीं गुडा achievement गुडा आसीबो. Student would plan for assessment with the help of the teacher or the with coordination with the teacher. It is more appropriate. Constructivist classroom कोइछ. तो active learning environment रहिबो, learning centered रहिबो. Both teacher and students are active. Which one of these statement do you agree with? को statement सहित agree हबो.
डायरेक्टली जेनेटिक मटेरियल को दोष दे देकी चाइल्ड फेल्योर पाई जेनेटिक मटेरियल बापा माँ दायी हम कि हम इकोनॉमिक स्टेटस टा दायी हम कि पेरेंट्स को एजुकेशन को दायी कर दबा हम कि गवर्नमेंट इनफ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स दौनी एटा भी हबन हम ए चाइल्ड्स फेल्योर is a reflection on the system and its inability to respond to the child. Child or need को अनुसारे ये जो एजुकेशन सिस्टम अच्छी से ठीक रे ताको गाइड करी पारिनी तारो नीड ता वैल्यू को बुझी पारिनी ता नीड को पूरा करी पारिनी सेति पई फेल्योर हेच तो डी इज मोर अप्रोप्रिएट एंड द राइट आंसर जो माने भी इति सहित जोड़ी हेचो एक्सप्लोरिंग गोल सहित से समस्त को कहबी जे धन्यवाद थैंक यू यू हैव डिसाइडेड टू जॉइन द क्लासेस दैट इज अ ग्रेट थिंग एंड मु जोटा कहितली जो स्ट्रैटेजी देइतली शेष वार्ता जोटा देइतली से अनुसार तुम माने काम करथो बोली एक्सपेक्ट करूचे थैंक यू एंड एटी असेसमेंट बाय ओनली पेपर पेंसिल कहला जतबे ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट होची लिमिटेशन हे जिवो बा लिमिट्स असेसमेंट हो राइट आंसर जेहेतु एति गोटे नेगेटिव जिनसटी कहा जाइछे एठी नेगेटिव जिनसटा ही तार आंसर हो टीचर्स कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक क्रिएटिवली बाय थैंक यू जयंती गायत्री थैंक यू टीचर्स कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक क्रिएटिवली बाय asking them to memorize द्वारा creativity बढ़िबनी recall based question multiple choice question रे हबनी ask them different ways to solve a problem variety of way रे गोटे problem को मु कहितली गोटे problem को जेतबेला हमें many solution गोटे problem रो बाहर करिबा सेतबेला हमें कहबा सेटा creatively चिंता करा जाइछ which one of the following is a good example of scaffolding learning of a problem solving task till the student is able to do it by himself herself okay good example of scaffolding quota learning of a problem solving task till the student is able to do it by herself संभावना थैंक यू निश्चित रूपे संभावना अच्छी संभावना नो एबे सर्टेनिटी आसी गला तो scaffolding कोटा telling her that she can do it by trying again and again it is scaffolding हला कि तू बारंबार कर तो रही जो बोली offering a reward telling her she cannot go home till she solves the problem half solved problem दियो clue दियो clues दबा hints दबा गाइड करिबा हाँ टेम्पररी सपोर्ट पूरा कहले टेम्पररी सपोर्ट तेणु ए ऑप्शन इज द राइट आंसर जा द्वारा ताको किछि हम क्लू देले हिंट्स देले बा हाफ सॉल्व्ड प्रॉब्लम देले एबे एथर हे जीवो ना देख या पर एटा आ दुईटा स्टेप करिवार अछि तोर प्रॉब्लम सॉल्व हे जीवो yes this is the clue this is the hint this is the temporary support this is the guidance this is scaffolding yes which one of the following statements about learning is correct which one of the following statement about learning सहित related को statement ता ठीक अछि yes equivalent to acquisition of skills facilitated by social action
Passive receptive process does not depend on learner's previous knowledge. Koichi, learning is correct. Statement about learning is correct. Learning is facilitated by social actions, नहीं कि? हे परियो? बहुत बढ़िया. Acquisition of skill टा शिखिबा और learning भितर फरक अछि. Skill टा हमें training माध्यम रे शिखि जाऊ. Training और learning एका नुह. Passive receipt हबनी. Learning does not depend on learner's previous knowledge. अगर previous knowledge सहित पूरा depend करे हमें जानी छे, नहीं कि? Previous knowledge सहित हमें connect करके पढ़ू छे. Okay. Acha, dash is a process. What is a process through which a human infant begins to acquire the necessary skills to perform as a functioning member of the society? Process through which a human infant, choto chota, begins to acquire necessary skills to perform functioning members of society. Yes, को माध्यम रे होबो सोशलाइजेशन माध्यम रे. ताले प्रोसेस टार ना कोन? सोशलाइजेशन. Very good. According to Vygotsky, learning cannot be separated from. Learning को हमें काहाठू सेपरेट करि परिबा नाही. तो Vygotsky को हिसाब रे a measurable change in behavior, reinforcement, perception and attentional process, social context. Thank you. सबो बेले Vygotsky करा social and language. Dita जिनिस को importance. Language, thought processes. अच्छा, क्वेश्चन टाइम इच एमिति देखो ठीक है. क्वेश्चन टाइम इति language dash thought process. Does not influence कहले होबनी, cannot determine कहले होबनी, totally govern कहले भी होबनी. किछि प्रभाव रहिछ हमर चिंतन उपरे, चिंता शक्ति उपरे, चिंता प्रणाली उपरे, चिंता करिवार तरीका उपरे. इजी क्वेश्चन. डेवलपमेंट केवटू बिफोर बर्थ. बिफोर बर्थ टा कोन? प्रीनाटल स्टेज. ओके, बिफोर बर्थ. When previous learning makes no difference at all to the learning in a new situation, it is called. नो डिफरेंस कहूँ कौन ना कि जीरो ट्रांसफर हम जदि किसी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता पॉजिटिव होता किसी प्रभाव माने नेगेटिव प्रभाव माने शिखिबाटा अन्य शिक्षा रे असुविधा करूची. नेगेटिव एब्सोल्यूट ट्रांसफर जीरो ट्रांसफर, एटी जीरो ट्रांसफर ही हो, किसी इंपैक्ट पकोनी. क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ. बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन. ओम टू टम किए पचारिछ? वर्षा राणी.
इट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत बढ़िया समस्त भल कल आज 20टा ही क्वेश्चन तुम मान अच्छी सो थैंक यू एवरीवन फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विद एक्सप्लोरिंग गोल्स टेलीग्राम चैनल एक्सप्लोरिंग गोल्स भी जॉइन कर जाओ एंड सब्सक्राइब कर दियो जदी यूट्यूब चैनल नुआ अच्छो एंड लाइक करिवो वीडियो को एंड एमती 20टा क्वेश्चन भी करो वी मे नॉट गो फॉर 50-60 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन या पूर्व 40-50 मु करैथिली बट सब क्वेश्चन को एनालिसिस करिवो एंड गोटे टाइम स्पेसिफिक एथरो एजेंडा करिवा कि टाइम स्पेसिफिक भी हमें करबा को चेष्टा करिवा कि हमको 20टा क्वेश्चन एटलीस्ट मैक्सिमम 20 मिनिट पर्यंत हमें देई परिवा जाई जाई 25 मिनिट पळेला ताको केमती मैनेज करबा अदर क्वेश्चंस रे सेटा भी हमको देखिबा को पड़िबो we have to manage time and time management in your LTR main examination and all competitive examination plays a very vital role. Thank you everyone for staying connected. धन्यवाद समस्त को. Take care. जय जगन्नाथ.